The micro, small and medium enterprises, also known as the MSME sector in India, continues to demonstrate remarkable resilience in the face of trying global and domestic economic circumstances. The sector has sustained an annual growth rate of over 10% for the past few years. With the ongoing Make in India campaign by the Prime Minister, MSMEs have become a critical link for the success of the campaign as they aid product exports and, importantly, create jobs. Yes Bank, India's fifth largest private sector bank with its pan-India presence, has taken a leadership position among its Indian banking peers by mainstreaming the sustainable development agenda at the global stage. Yes Bank launched its capacity building initiative to make Indian MSMEs globally competitive through sustained interventions in health and safety and energy efficiency. MSMEs in our country are really the cornerstone, the backbone of our economy. So a bank like ours is playing a role in terms of looking at some of the safety and occupational issues, health issues, skill development issues in a number of the MSME clusters. Yes Bank, along with Foundation for MSME Clusters, launched in January 2015 a CSR initiative called Say Yes to Sustainable MSMEs in India. The initiative works towards promoting energy efficiency and occupational health and safety (OHS) within the Indian MSME sector. Wanted to bring about and intervene as far as energy efficiency within the SMEs is concerned and the occupational health and safety of the workers at the SMEs, and we thought that the whole EU project was a great initiative given that it had partners like UNIDO, GIZ, GRI and SIDBI and Foundation of MSME Clusters on ground to actually implement this entire project for us. Say Yes to Sustainable MSMEs in India has been successful in reducing 5,000 metric tons of CO2 emissions in India through its multifaceted interventions. All the activities of this project under the Yes Bank were essentially complementing and supplementing the various activities which were already being undertaken with the support from European Union, and we moved from just one foundry sector to 8 different sectors, from 3 states to 9 states. And all these activities were a part of the Schedule 7 of the Section 135/2013 Companies Act, which focused upon environmental sustainability through energy efficiency and renewable energy, skill development and healthcare. The unique feature of this particular project was that it relied very heavily on the business case and the low-hanging fruits. And all these activities were ensured sustainability through an outreach and aggregation from the industry associations and linkages with various relevant stakeholders in the project. The chosen sectors that involve energy-intensive manufacturing processes are foundry, dyeing and textile, rice mill, rubber manufacturing, plastics, castings and forgings, wet grinder manufacturing, and manufacturing of electronic accessories. Before structured interventions were launched, it was observed that the workers and owners in these sectors were not benefiting from the existing practices and technologies. The interventions have not only increased the level of awareness but also mitigated environmental hazard. There are 4,500 registered foundry units in the country, and most of them lack knowledge of OHS and environmental sustainability, including energy conservation. Yes Bank is tapping into the energy-saving potential of foundry units that ranges from 25 to 65%. Through structured interventions, a win-win situation is created, translating into reduction of emission with lowered energy costs. उनका जो मेन फोकस है वो पावर और एनर्जी कैसे हम बचा सकते हैं, वो उनका फोकस रहा है। तो हमने हमारी फैक्ट्री में उसका एक्सपेरिमेंट किया और ये कहने में कहीं मेरे को डाउट नहीं है कि उसका हमको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। अराउंड फ्यूल जो हमारा था वो 10 to 15% फ्यूल सेव हुआ हमारा। And Yes Bank, bringing in new methods, it helps in increasing us the profit margin and reducing the cost ultimately. पहले तो जो काम करता था वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है,
अभी यस बैंक का सपोर्ट भी, टेक्निकल सपोर्ट भी हम लोग को एनर्जी भी कमा है, टाइम भी सपोर्ट हुआ है। OHS practices and awareness are required for better health and safety of workers in these units. The initiative also established safety standards and practices to boost productivity and efficiency of workers. बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने मिला हम लोग को। किसका कट जाएगा तो क्या करना होगा, किसका जल जाएगा तो क्या करना होगा। कट जाएगा तो उसको धो के वो कपड़ा बांध के हॉस्पिटल पहुंचाना है, जिसका जल जाएगा तो उसे पानी उन्हें डला के जितना जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल लेके जाना है। बहुत कुछ सीखने मिला हम लोग को। ऐसा ट्रेनिंग हो रहेगा तो और अच्छा लगेगा हम लोग को। இந்த ட்ரைனிங் OHS ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா எங்களுக்கு அதுக்கான ரிலேட்டடான அவேர்னஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்துட்டு அந்த கிளாஸ் சேஃப்டி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறது, க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணுறது, இந்த சேஃப்டி ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நாங்கள் கண்டினியூஸாக இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். Adding to air pollution, the units also contribute heavily to water pollution because of untreated wastewater containing chemical dyes and pigments. The hazardous dyes and chemicals not only harm the environment but also the workers who lack knowledge on the use and handling of such chemicals that can directly impact their health and safety. ट्रेनिंग से पहले जो हमारे वर्कर्स को प्रॉब्लम आती थी, डाइंग कलर से उनको एलर्जी होती थी, उसके रिगार्डिंग डॉक्टर साहब ने आके हमारे यहाँ पे उन्होंने उनको मेडिसिन दी जिससे उनको बहुत बेनिफिट्स हुआ. The project has worked towards establishing safety procedures in the sector while ensuring regular health checkups of the workers. ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। बेलर पर काम करते थे, दस्ताना से ये कपड़े से राहत मिला है, गर्मी नहीं लगता है। FMC कंपनी ने हमको सिक्योरिटी के बारे में समझाया, जिसमें सेफ्टी, हेल्थली और फेयर के बारे में बताया, जिससे कि हमको बहुत ही काम करने में आसानी हुई है। हम अपना हर एक काम इजीली तौर पे कर पाते हैं, जिससे कि हमें चोट पीट लगती थी वो भी ख़त्म हो गई है और हर काम अपना सेफ्टी से करते हैं हम लोग अब, जिसमें हमको हेलमेट, ग्लव्स, शूज वगैरह दिए गए। Energy audits have also been conducted in these units to analyze their need to adopt better energy efficient alternatives to reduce energy consumption. यस बैंक ने जो एनर्जी कैंप हमारी फैक्ट्री में लगाया था उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इन्होंने हमें एनर्जी सेविंग के बारे में, जिसमें बिजली की जो हमारी ब्रेकडाउन हुई, तारें ब्रेकडाउन हुई थी, कहीं हमारी तारें बहुत मोटी लगी हुई थी और कहीं हमारी मोटरें बहुत पुरानी थी और कई जगह हमारी स्टीम लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं दोबारा, उसका हमें काफ़ी हमारी फैक्ट्री को फ़ायदा हुआ। और अगर इनके डाटा के हिसाब से अगर हम ये सारा काम पूरा कर लेते हैं तो हमारी फैक्ट्री को काफ़ी फ़ायदा होगा। Rice milling is one of the major industries in the district of Karnal and Kaithal in Haryana. The milling capacity varies from 0.5 MT per hour to 8 MT per hour, thus making these districts with adjoining areas known as the rice bowl of the country. Despite high production, the rice mill owners lack awareness on energy efficient technologies and pollution control mechanisms. एनर्जी ऑडिट करवाने का सबसे मेनली ये था, इस समय जो हमारी ट्रेड है ना वो काफ़ी लॉस में चल रही है। हम लोग जो हमारे जो एक्सपेंसेस जो लॉसेस हैं, हम लोग वो एक्सपेंसेस और लॉसेस को कम करना चाहते हैं, जिससे हम प्रॉफिट में आ सकें। एनर्जी ऑडिट का सबसे मेन इशू यही है। और जो भी हमारी वेस्टेज हो रही है, क्यों जो अगर हमारे यहाँ कुछ भी वेस्ट हो रहा है वो नेशन का भी वेस्ट हो रहा है ना, नेशन को भी बेनिफिट होगा। जितनी एनर्जी हम सेव करेंगे वो दूसरे को यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। A study conducted on rice mill industry in Haryana indicated that the cluster faces issues like occupational health and safety of workers. Occupational health and safety practices have been introduced into these clusters. हम जो स्टाफ को जो ये ट्रेनिंग लेंगे, उस ट्रेनिंग में ये जो मशीनें चलाते हैं, मशीनों में रहते हैं, उसको तरीके से चलाएंगे। इनके जीवन की भी सुरक्षा है, मशीनों की भी सुरक्षा है और प्लांट को तरीके से देना चलाते हुए हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे। सर, जो मैं ट्रेनिंग लिए थे उस ट्रेनिंग से बहुत ही ऊंचे पर काम करना पड़ता था और खतरे का ज़्यादा वो था। उस ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सावधानी से अपना काम कर रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा हुआ है जी।
The use of obsolete technology with high wastages and chemical handling are making the industry units unsustainable. Yes Bank's interventions and the benefits thereof have helped rubber units establish sustainable business practices. इसके बारे में वाटर का हमें पता लगा कि वाटर की कैसे सेविंग होगी और उसके बाद बॉयलर में कैसे स्टीम की सेविंग होगी, उसके बारे में पूरा हम ध्यान भी दे रहे हैं। उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट चेंज भी किए हैं और उसका इलेक्ट्रिसिटी के बारे उसके भी कुछ इंस्ट्रूमेंट चेंज किए हैं, जिसका हमारी लगता है कि सेविंग काफ़ी होगी। बहुत बढ़िया हमारे लिए है ये। Since the rubber product involves scientific handling of materials, health and safety measures are paramount in the industry. However, awareness of OHS practices was dismal, allowing the bank to effectively improve working conditions. There are a lot of problems in the rubber factory, like a lot of dust has been coming out. Dust is the main factor, I must say. Dust is the main product of our firm. डॉक्टर साहब आए तो फिर ही मेरे को चेक किया और दवा दिए। मैं सेहत मेरा ठीक है। पहले थोड़ा दिक्कत हो रही थी, नाक में लगाने से कुछ राहत मिल रहा, प्रदूषण अंदर नहीं जा रहा, कार्बन के फैक्ट्री है, इसलिए कुछ राहत है अब दवा से। Use of old technology, unhealthy work culture, high pollution level are the issues faced in this cluster. There is no or very low awareness on energy conservation and use of alternate energy for day-to-day operations. Here we were not that much aware or rather cautious for energy conservation. Being in a polymer industry, a plastic industry, it is very much required. Now we came to know after the intervention of Yes Bank. They gave us an eye-opener session that we are wasting the energy and we are not utilizing it properly. एनर्जी एफिशिएंसी ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਏਡ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RO ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। The project has established OHS awareness and safety standards that have given a boost to the productivity and efficiency of the workers. मुझे करीबन 22 साल हो गए इस कंपनी में काम करते हुए और मुझे सेफ्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने जो सेफ्टी दिया हमें उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ हमको। इन्होंने ग्लव्स भी दिए हमको, हेलमेट भी दिया है और मास्क भी दिया है और हेडफोन भी दिया है इन्होंने। इसकी वजह से हमें काम करने में काफ़ी आसानी होती है। Casting industry is facing fundamental problems like power shortage and environment pollution due to sand, metal debris, chemicals, etc. Forging industry uses both thermal and electrical energy depending on the type of forge. There is ample opportunity for energy conservation through upgradation of technology for environmental sustainability. Previously, oil consumption 268 liters per day varum. FMC-லேருந்து வந்தாங்க, வந்துட்டு சில சஜஷன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா we were about to save 7 liters per day. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா per annum about 38,000 rupees சேவிங்ஸில் கொண்டு வந்து நிற்கிது. OHS interventions raise level of awareness and satisfaction of the workers working in these units. It has helped units in raising productivity and profit. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్లో యూజ్ చేసుకుంటూ పనిచేయడము, లేకపోతే వాళ్ళు ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీగా పనిచేయడం కూడా తగ్గి మా ప్రొడక్షన్ కూడా రోజు రోజుకు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఎస్ బ్యాంక్ వారు కల్పించినటువంటి ఈ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వల్ల యాజమాన్యానికి అలాగే వర్కర్స్ కూడా ఒక మంచి ప్రికాషన్స్ అనేది అర్థమైంది. ఈ భాగంలోనే ఇండస్ట్రీ కూడా గ్రోత్ అవ్వడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఉంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం. Wet grinding cluster in Coimbatore has taken steps for environmental sustainability interventions to help analyze opportunities for implementation of energy efficiency measures. They really got into the details, studied the various aspects of our energy requirements. They proposed a solution on 3 lines after studying.
So we hope to save at least 20% with their inputs. இப்போது எஃப்எம்சி எங்களை அப்ரோச் பண்ணி நாங்கள் அவங்கள அலோவ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு வந்து நல்ல எனர்ஜி வந்து 20% சேவ் ஆகிருக்கு. அந்த 20% சேவ் ஆனதுனால எங்களுக்கு வந்து காஸ்ட் சேவிங் ஆகிருக்கு. OHS activities have helped to raise level of awareness, satisfaction and belongingness of workers working in these units, further improving the productivity. The electronic goods cluster of Hyderabad is known for producing semiconductors for consumer electronics goods, mobile phones and industrial products. Environmental sustainability interventions in the cluster have helped in significant energy conservation. OHS activities have helped imbibe better practices along with medical care. ఎస్ బ్యాంక్ వాళ్ళు మాకు ఇలా క్యాంప్ అరేంజ్ చేశారు. చాలా బాగుందండి. మాకు ట్రీట్మెంట్ మంచిగా జరిగింది. ఇలా 6 నెలలకు ఒకసారి పెడితే చాలా బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం మేము. ఆ మెడిసిన్స్ కూడా మాకు చాలా పనిచేశాయి, యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. And some of the medicines I think which was given by the doctor, it helped a few of our employees and they have come back to say they're feeling better. So maybe the quality of the medicines and the diagnosis was, up much better. And they actually some of them came and asked me would we be having a camp again. The MSMEs in these sectors have been introduced with energy efficiency measures that can lead to reduction in their energy expense and carbon footprints. Energy audits have helped to analyze opportunities for all such interventions. We, through our subsidiary ISTSL, took up this initiative of creating awareness among the MSMEs. And once the awareness is created among MSMEs in various clusters, we took up audit of these MSMEs and we initiated them to take appropriate action. So we have created a buzz among the MSMEs in the sector of the benefits of energy efficiency measures in MSMEs. We want to cover a number of clusters, especially we are working with another progressive banks like Yes Bank, so that take this initiative forward. So we could cover more number of MSMEs. We are, working with MSMEs to heighten their energy efficiency attitude with energy audits, and then helping them with bringing about the right kind of policies at their ground level to look at how they can bring about energy efficiency within their unit. जहाँ हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो सेव होगी तो वर्कर को भी उसके हिसाब से कम काम करना पड़ेगा. जब उसको काम कम करना पड़ेगा उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी. तो एनर्जी सेविंग जितनी मिल के हित में है, वर्कर के हित में भी है और राष्ट्र के हित में भी है. इसी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके और सभी मिलों में कोशिश करेंगे ये एनर्जी सेविंग का ऑडिट करवाएं और राष्ट्र हित में और फैक्ट्री हित में ये कार्य होगा. Rising energy prices are generating new problems for MSMEs. In this scenario, renewable energies represent the most adequate sources of energy. Thus, MSMEs can significantly contribute in upscaling themselves through renewable energy. One can expect up to 30% direct reduction in fossil fuel consumption and pricing over a 30-year horizon, given that the lifetime of these solutions is up to 25 to 30 years. Consequently, there is a hedge that the customer can see without having to worry about any escalation in fossil fuel prices and any lack of availability issues. The project aims to take the pilot initiatives in the areas of renewable energy usage in MSMEs to a scaled-up implementation level in the coming years. The sensitization of the MSMEs through OHS and environmental sustainability and usage of renewable energy is a step forward. The project in the coming years plans to scale up these pilot initiatives to make MSMEs improve their environmental and social track record. To me, this is a very important mission in achieving the Prime Minister's objective of zero defect and zero effect. Yes Bank has incorporated the ethos of responsible banking, through which it has been mainstreaming sustainable development. Say yes to sustainable MSMEs in India.